Charanjana Yamunatira Vanachan Yamunatira Vanachan Jaya Radha Madhava Kunya Bihari Jaya Radha Madhava Kunya Bihari Tomorrow we will celebrate Sri Gaura Purnim, and therefore today I will speak on a verse spoken by Prahlad Maharaj. Prahlad Maharaj is praying to Lord Nrsimhadev in the 9th chapter of the 7th canto, and he's speaking about Lord Chaitanya. So this is a verse of the Bhagavatam predicting Lord Chaitanya, and there is another verse predicting Lord Chaitanya in the 11th canto, and there are more indications. Good. Chapter 7, here Canto 7, Chapter 9, Text 38. Prahlad pacifies Lord Nrsimhadev with prayers. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So I will try to read it because I'm short-sighted. I can't see it with my glasses. I try my best. Itam nityah rishidevaya savatareh. Itam Vitiryadushideva Savatare. Itam nityah rishidevaya savatareh. Itam Vitiryadushideva Savatare. Lokam vibhavayasi hamsi jagat pratipan. Lokan vibhavayasi hamsi jagat pratipan. Dharmam mahapurushapasi yuganuvrittam. Mahapurushapasi yuganuvrittam. Shano kalo yadabhavasti yuhata sattvam. Channaha kalo yadabhavasti yuhata sattvam. Itam nitihyah rishidevya savatareh. Itam vitiryadushideva savatare. Lokam vibhavayasi hamsa jagat pratipan. Lokan vibhavayasi hamsi jagat pratipan. Dharmam mahapurushapasi yuganuvrittam. Mahapurushapasi yuganuvrittam. Shana kalo yadabhavasti yugota sattam. Channaha kalo yadabhavasti yugota sattvam. Itam nityah rishidevaya savatareh. Itam vitiryadushideva savatare. Lokan vibhavayasi hamsi jagat pratipan. Lokan vibhavayasi hamsi jagat pratipan. Dharmam mahapurushapasi yuganuvrittam. Dharmam mahapurushapasi yuganuvrittam.
Channa kalo yadabhavasti yugauta sattvam. Channa Kalo Yadavasti Yodha Sattva Iddham Vitirya Vishidev Dasavatare Lokan Vibhavayasi Hamsi Jagat Pradipan Dharma Mahapurusha Pasigan Channa Kalo Yadavati Yodha Sattva Iddham Vitirya Krishidev Dasavatare Lokan Vibhavayasi Hamsi Jagat Pradipan Dharmam Mahapurusha Pasiyuganuvritta Channa Kalo Yadavati Yodha Sattvam Iddham Vitirya Krishidev Dasavatare Lokan Vibhavayasi Hamsi Jagat Pradipan Dharmam Mahapurusha Pasiyuganuvrittam Channa Kalo Yadavati Yodha Sattvam Mataji's please. Prabhuji told to translate me, so I am sitting. Word for word translation. Etam, in this way, Nri, like a human being, such as Lord Krishna and Lord Ramchandra, such as Lord Krishna and Lord Ramchandra, Tiryak, like animals, like animals, such as the boar, such as the boar, Rishi, Rishi, as a great saint, as a great saint, Parasuram, Parshuram, Deva, Deva, as demigods, as demigod, Yasa, Rasa, as an aquatic, as an aquatic, such as the fish and tortoise, such as the fish and tortoise, Avatarai, Avatare, by such incarnations, by such incarnations, Lokan, all the different planetary systems, all the different planetary systems, Vibhavayasi, Bhavayasi, you protect, you protect, Hamsi, Hamsi, you you sometimes sometimes kill, kill, Jagat Pratipan, Jagat Pratipa, persons who have simply created trouble in this world, persons who have simply created trouble in this world, Dharmam, Dharmam, the principles of the religion, principles of religion, Mahapurusha, Mahapurusha, a great personality, O great personality, Pasi, Pasi, you protect, you protect, Yuga Anuvritam, Yuganuvritam, according to the different millenniums, according to the different millenniums, Shana, Chandaha, covered, covered, Kala, Kalau, in age of Kali, in the age of Kali, Yat, yet, since, since, Abhavaha, Abhava, have been, have been, and will be in the future, and will be in the future, Triyuga, Triyuga, named Triyuga, named the Triyuga, Atta, Atha, therefore, therefore, Saha, Saha, the same personality, same personality, Tvam, Tvam, you, you,
In this way, my Lord, you appear in various incarnations as a human being, an animal, a great saint, a demigod, a fish, a tortoise, thus maintaining the entire creation in different planetary systems and killing the demoniac principles. According to the age, O my Lord, you protect the principles of religion. In the age of Kali, however, you do not assert yourself as the Supreme Personality of Godhead, and therefore you are known as the Yuga or the Lord who appears in 3 yugas. हे प्रभु, इस प्रकार आप विभिन्न अवतारों में जैसे मनुष्य, असुर, ऋषि, देवता, मत्स्य या कश्यप के रूप में प्रकट होते हैं और इस प्रकार से विभिन्न लोकों में संपूर्ण सृष्टि का पालन करते हैं तथा आसुरी सिद्धांतों का वध करते हैं। हे भगवान, आप युग के अनुसार धार्मिक सिद्धांतों की रक्षा करते हैं, किंतु कलयुग में आप स्वयं को भगवान के रूप में घोषित नहीं करते, इसलिए आप त्रियुग कहलाते हैं, अर्थात 3 युगों में प्रकट होने वाले भगवान। Purport by A.C. Bhakti Swami Srila Prabhupada ki. As the Lord appeared just to maintain Lord Brahma from the attack of Madhu and Kaitava, he also appeared to protect the great devotee Prahlad Maharaj. Similarly, Lord Chaitanya appeared in order to protect the fallen souls of Kali Yuga. There are 4 yugas or millenniums, Satya, Treta, Dvapara and Kali. In all the yugas, but Kali Yuga, the Lord appears in various incarnations and asserts himself as the Supreme Personality of Godhead. But although Lord Chaitanya Mahaprabhu, who appears in Kali Yuga, is the Supreme Personality of Godhead, he never asserted himself as such. On the contrary, whenever Sri Chaitanya Mahaprabhu was addressed as being as good as Krishna, he blocked his ears with his hands, denying his identity with Krishna, because he was playing the part of a devotee. Lord Chaitanya knew that in Kali Yuga there would be many bogus incarnations pretending to be God, and therefore he avoided asserting him as the Supreme Personality of Godhead. Lord Chaitanya Mahaprabhu is accepted as the Supreme Personality of Godhead. However, in many Vedic literature, especially in Srimad Bhagavatam 11.5.32, Krishna Varnam Tvija Krishnam Sangoparastas Parshnam Sakhyer Sankirtana Prayer Yanti Sumedasa. In Kali Yuga, intelligent men worship the Supreme Personality of Godhead in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is always accompanied by his associates such as Nityananda, Advaita, Radhadar, and Srivas. The entire consciousness, Krishna consciousness movement is based on the principles of Sankirtan movement, inaugurated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. Therefore, one who tries to understand the Supreme Personality of Godhead through the medium of the Sankirtan movement knows everything perfectly. He is Sumedas, a person with substantial intelligence. तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जिस प्रकार मधु तथा त्रेटक के आक्रमण से ब्रह्मा की रक्षा करने के लिए भगवान प्रकट हुए थे, उसी प्रकार वे परम भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए भी प्रकट हुए। इसी प्रकार कलयुग के पतित जीवों की रक्षा के लिए भगवान चैतन्य प्रकट हुए। युग 4 में सत्य, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। कलयुग को छोड़कर शेष 3 युगों में भगवान विभिन्न अवतारों में प्रकट होकर भगवान कहलाते हैं, किंतु यद्यपि कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान हैं, किंतु उन्होंने कभी भी अपने आप को भगवान नहीं कहा। उल्टे जब जब उन्हें कृष्ण के समान होने वाले संबोधित किया गया, तब तब वे अपने हाथों से अपने कान बंद कर लेते थे और अपने आप को कृष्ण कहने से मना कर देते थे, क्योंकि वे भक्त की भूमिका निभा रहे थे। वे जानते थे कि कलयुग में अपने आप को ईश्वर का नकली अवतार कहने वाले अनेक लोग होंगे, अतः वे अपने आप को भगवान कहे जाने से कतराते रहे। किंतु अनेक वैदिक ग्रंथों में, विशेष रूप से भागवत में, चैतन्य महाप्रभु को भगवान स्वीकार किया जाता है। 11.5.20
विष्णुवर्णं तुषारकृष्णं समलोकाङ्गस्तकृष्णं यज्ञे संकीर्तनराजैर्जन्तीः सुमेधसः। कलयुग में बुद्धिमान लोग भगवान की पूजा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में करते हैं, जो नित्यानंद, अद्वैत, गदाधर तथा श्रीवास जैसे अपने पार्षदों से सदैव घिरे रहते हैं। समग्र कृष्ण भावनामृत आंदोलन संकीर्तन आंदोलन पर आधारित है, जिसका सूत्रपात श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा किया गया। अतः जो भी व्यक्ति संकीर्तन आंदोलन के माध्यम से भगवान को समझने का प्रयास करता है, वह प्रत्येक वस्तु को भली भांति जान लेता है। वह सुमेधस अर्थात प्रचुर ज्ञानवान व्यक्ति होता है। Om Jnanatimanasya Janansalashakya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namah. Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Yena Bhutale Svamrupakadamayam Dadati Svapadantikam Vandeyam Shiru Shiyuda Padakamalam Shirum Vaishnavam Shah Shri Rupam Jarjatam Sakanaragnatam Tam Tam Sajivan Sadvaitam Savadutam Bhajana Saitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sakalita Shivashakam Vitamsha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jatpate Gopesha Gopakanta Radha Kanta Namastate Tapta Kamshna Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhana Sutadevi Pataka Payoshime Vancha Kalpta Vishakri Pasanve Visha Patnam Pavanabhyo Vaishnavyo Namo Namah Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare. Namo Vishnu Padaya Krishna Vastaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namne Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharane Nirvishesha Sunyavadi Bhaskacharya Desatarana Srila Prabhupada Ke. So Prahlad Maharaj makes the point that the Lord appeared in different forms that to protect Dharma, to protect his devotees. तो प्रहलाद महाराज बताते हैं कि भगवान अलग-अलग लोगों में अलग-अलग रूपों में प्रकट होते हैं, धर्म की रक्षा करने के लिए और भक्तों की रक्षा करने के लिए। Even in the beginning of the creation, there were big demons which were not created by Brahma, they were there already. यहाँ तक कि सृष्टि के प्रारंभ में भी ऐसे असुर थे जो कि ब्रह्मा जी द्वारा नहीं बनाए गए थे, वो पहले से ही वहाँ पे थे। Srila Prabhupada mentioned in the purport Madhu and Kaitava. श्रील प्रभुपाद बताते हैं मधु और कैटव नाम के असुर थे। These demons had great mystic powers. इन असुरों के पास बहुत जटिल शक्तियाँ होती हैं। They could steal the contents of one's mind. ये मन की बात को भी पढ़ लेते थे। And they stole the Vedas from the mind of Brahma. और उन्होंने ब्रह्मा जी के मन से वेदों को चोरी कर लिया। So Brahma, it took a whole time before he got the Vedas, a long time. तो ब्रह्मा जी को बहुत समय लगा था, उसके बाद जाके उनको वेदों की प्राप्ति हो पाई थी। And he had to start his creation, but he lost the Vedas. He didn't know how to create anymore. तो वो सृष्टि को प्रारंभ करने वाले थे, लेकिन वेदों की चोरी हो गई, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो सृष्टि करे कैसे। So he was praying to the Lord, please give me the Vedas again. तो वो भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, कृपया वेदों को मुझे पुनः प्रदान कीजिए। But it takes a lot of time to get these Vedas to the heart, that he had experience of that. तो लेकिन ये वेदों को हृदय में
So please give me first the essence. तो उन्होंने कहा कृपया मुझे पहले सार प्रदान कर दीजिए वेदों का। And the Lord gave him the essence in 5 nights. तो भगवान ने उनको सार प्रदान किया 5 रातों में। And this essence is called Pancha Ratna, 5 nights. तो इस सार को कहा जाता है पंचरात्र, 5 रातें। That, and later he gave this knowledge to Narada. और ब्रह्मा जी ने बाद में ये ज्ञान नारद मुनि को प्रदान किया। And Narada expanded it and it became the Narada Pancharatna. और नारद जी ने फिर इस ज्ञान को विस्तार किया और उसका नाम हुआ नारद पंचरात्र। Anyway, after that, the Lord gave him the Vedas in the form of the Shatrashloki of the Bhagavatam, which then expanded. इसके बाद भगवान ने ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किए श्लोकी भागवत के रूप में। ब्रह्मा जी ने इसका विस्तार किया। So the Lord protected him. तो भगवान ने उनकी रक्षा की इस प्रकार से। And it's mentioned here in the purport. Garga Muni had already predicted and said to Nanda Maharaj, तो इसके तात्पर्य बताया कि गर्ग मुनि ने पहले ही नंद महाराज के पुत्र के बारे में भविष्यवाणी की थी। your son is called Triyuga. आपके पुत्र का नाम है त्रियुग कहा जाता है इसको। Now he has appeared in a blackish form, अभी ये श्याम वर्ण में प्रकट हुए हैं। but he appears also in a white form, in a red form, and a yellow form. लेकिन ये आपके जो पुत्र हैं ये श्वेत रक्त और पीत वर्ण में भी प्रकट होते हैं। So the white form is Hamsa avatar. तो जो श्वेत वर्ण है वो हंस अवतार। That's in Satya Yuga. वो सतयुग में प्रकट होते हैं। And in Treta Yuga we have Jakya avatar, the red one. त्रेता युग में यज्ञ अवतार के रूप में जो रक्त वर्ण में प्रकट होते हैं। So who is the yellow one? तो फिर पीत वर्ण में कौन प्रकट होता है? The Lord is called Triyuga because in the 4th Yuga, Kali Yuga, he appeared Chana, is covered. तो भगवान को त्रियुग कहा जाता है क्योंकि चौथे युग में भगवान छन्न यानी छिपे हुए अवतार के रूप में प्रकट होते हैं। So Lord Chaitanya does not appear like Ramchandra, Lord Varadev, and so on. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु इस तरह प्रकट नहीं हुए जिस तरह रामचंद्र भगवान या वराहदेव प्रकट हुए। He appeared yellow or golden. वो पीत वर्ण में या स्वर्णिम रूप लेकर प्रकट हुए हैं। Because the golden hue of Lord Chaitanya's body comes from Srimad Radharani. क्योंकि ये जो स्वर्णिम जो आभा है भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो पीत वर्ण वो श्रीमती राधारानी से आता है। He is in the mood of Srimad Radharani. वो श्रीमती राधारानी के भाव को ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। We will hear tomorrow certainly about the external and the internal reasons for the appearance of Lord Chaitanya. इस तरह भगवान चैतन्य महाप्रभु के प्रकट होने के बाह्य कारण हैं और आंतरिक कारण हैं। But he is the most magnanimous incarnation. लेकिन वे परम पदान्याय अवतार हैं, He is the most merciful. परम करुणामय हैं। And without Lord Chaitanya's mercy, we can't make spiritual progress in Kali Yuga. हम चैतन्य महाप्रभु कृपा के बिना कलयुग में हम आध्यात्मिक उन्नति कर ही नहीं सकते। Because Lord Krishna has explained, Sarvadamam Prachya Mamakam Samvanam Amtvam Sarvapabhyo Mokshishami Machacha. Just surrender unto me, do not worry. क्योंकि भगवान भगवत गीता में बताते हैं कि सब धर्मों को त्याग करके मेरी शरण में आ जाओ। But people of Kali Yuga are so dull-minded they cannot understand what it means surrender to Krishna. कलयुग के लोग इतने मंदबुद्धि हैं, जड़बुद्धि हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं कि शरणागत होने का अर्थ क्या है। Always disturbed. हमेशा परेशान हैं। So Lord Krishna knew this. तो भगवान कृष्ण ये बातें जानते थे।
And therefore, he decided to appear again और इसलिए उन्होंने पुनः प्रकट होने का निश्चय किया in Kali Yuga. कलयुग में। That it's interesting. You have a day of Brahma is 1,000 Divya Yugas. ये बहुत रुचिकर बात है कि ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 दिव्य युग आते हैं। Is in one day of Brahma, 1,000 Divya Yugas, and there are 40 Manus. ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 दिव्य युग हैं और 14 मनु प्रकट होते हैं। Every Manu lives a bit more than 71 Divya Yugas. हर मनु का जो शासनकाल है 71 दिव्य युग से थोड़ा सा ज्यादा होता है। Present Manu is Vaivasvata Manu. वर्तमान मनु है व्यवस्थित मनु। And now we are in the 28th Divya Yuga of the 71. और अभी हम 7वें मनु के 31 युगों में से 28वें चल रहे हैं। And in the Dvapara Yuga of the 28th Divya Yuga, Lord Krishna appears. 28वें दिव्य युग के द्वापर युग में भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। It's a scheduled incarnation. He has to appear in the 28th Divya Yuga. पहले से इस तरह निश्चित है कि वे किस दिव्य युग में प्रकट होते हैं। But in the Kali Yuga of this 28th Divya Yuga, he appears as Lord Chaitanya. Krishna himself appears as Lord Chaitanya. और 28वें दिव्य युग के कलयुग में भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं। Because people in Kali Yuga cannot understand how to surrender. क्योंकि कलयुग के लोग ये समझ नहीं पाते हैं कि शरणागत हुआ कैसे है। They are puffed up and they think, yeah, surrender to who? Who is going to tell me to surrender? तो वो लोग इतने अहंकारी हैं, बोलते हैं किसको शरणागत हुआ है, कौन है उन्हें कहने वाला कि मैं किसी शरण में, I will surrender to no one. मैं किसी की भी शरण नहीं ग्रहण करूंगा। That's the problem in Kali Yuga. कलयुग में एक समस्या है। Is if someone orders you, they are going to protest. यदि कोई आपका विरोध करेगा तो हम भी उसका विरोध करने लगेंगे। Lord Krishna knew this, भगवान कृष्ण ये जानते थे, and therefore he came again as Lord Chaitanya. इसलिए फिर से आए चैतन्य महाप्रभु के रूप में। But only a few devotees understood him. लेकिन कुछ ही भक्तों को समझ पाए। That also when Krishna was present 5,000 years ago, only a handful of devotees could understand that he was the Supreme Personality of God. भगवान कृष्ण भी जब इस तरह 5000 वर्ष पहले थे तो कुछ ही भक्त ये समझ पाए कि कृष्ण को पुरुषोत्तम भगवान है। Because when Lord Chaitanya appeared, he came as Bhakta Rupa in the form of his own devotee. क्योंकि जब भगवान चैतन्य प्रकट हुए तो वो भक्त रूप में प्रकट हुए, अपने भक्त के रूप में। Of course, as the verse says, Sangho Panghastra, he appeared with his associates. ये श्लोक बताया है संघ उपांग, चैतन्य को अपने पार्षदों को साथ देकर प्रकट हुए। In fact, it was Advaita Acharyas who saw the abominable condition of the people in Kali Yuga. निश्चित रूप से अद्वैत आचार्य प्रभु थे जिन्होंने कलयुग के पतित जीवों की स्थिति को देखा। The world was devoid of bhakti. ये जगत कृष्ण भक्ति से शून्य था। Everyone was engaged in materialistic activities. हर व्यक्ति भौतिकवादी कार्यों में मग्न था। And Advaita Acharya, who is Krishna himself, अद्वैत आचार्य जो स्वयं भगवान कृष्ण है, who is Mahavishnu, महाविष्णु है, he decided to make an appeal to the Lord to appear. उन्होंने निर्णय किया कि भगवान से प्रकट होने के लिए याचना करेंगे। So, and how can we please the Lord?
He was remembering a verse saying that the Lord can be pleased by little water and by a tulsi leaf. तो वो एक श्लोक याद उनको आ रहा था कि भगवान थोड़े पानी और तुलसी पत्र अर्पण करने से प्रसन्न हो जाते हैं। But we have experienced when Krishna was in, when Krishna took the form of Govardhan, लेकिन हमको ये अनुभव है कि जब कृष्ण भगवान ने गोवर्धन का रूप धारण किया, then they were offering him so many preparations. तो जो ब्रजवासी थे वो कितनी सारी सामग्री अर्पित कर रहे थे, भोज्य सामग्री। And the Lord said, Aniyor, Aniyor, give me more, give me more. और फिर भगवान बोल रहे थे आनी और चाहिए मुझे, और चाहिए मुझे। And they came at the end of their supplies and they still said, Aniyor. और फिर उनके जो पूर्ति हैं वो बहुत लेके आते हैं, भगवान से बोलते हैं आनी और। But one devotee had the idea to offer the Lord a tulsi leaf. और फिर एक भक्त ने क्या किया, भगवान को तुलसी अर्पित कर दी। Then he was satisfied. तब वो संतुष्ट हो गए गोवर्धन के रूप में। So Advaitacharya knew this. तो अद्वैताचार्य ये बात जानते थे। He was worshipping his Salagram Srila and calling out to the Lord, loudly, please appear in this Kali Yuga. तो वो शालिग्राम शिला की पूजा इस तरह कर रहे थे और भगवान का आह्वान कर रहे थे कि हे भगवान, आप कृपया इस कलयुग में प्रकट होइए। Of course, when the Lord appeared, Advaitacharya knew who he was. निश्चित रूप से भगवान जब अद्वैताचार्य के कहने पे प्रकट हुए तो जानते थे कि ये कौन प्रकट हुआ। But it was faculty the first devotee who understood that that Lord Chaitanya is the Supreme Personality of Godhead, was Srila Rupa Goswami. व्यवहारिक रूप से जो पहले भक्त जिन्होंने समझा कि श्री चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वो थे श्री रूप गोस्वामी। He understood that Lord Chaitanya was the Supreme Personality of Godhead. वो समझ गए कि भगवान चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। So we can only understand the Lord Chaitanya through Rupa Goswami. तो भगवान चैतन्य महाप्रभु को हम केवल श्री रूप गोस्वामी के माध्यम से ही समझ सकते हैं। This is what Srila Prabhupada says. श्री प्रभुपाद यही कहते हैं। We have to understand it through Rupa Goswami, through the Guru Parampara system. हमें उनको रूप गोस्वामी के माध्यम से गुरु परंपरा पद्धति के द्वारा समझना है। That, yes, but the whole process to understand Krishna and to practice this Sarvadhamam Parichaya Mamakam Sramvacha is submission to Lord Krishna. तो ये जो पूरी विधि है भगवान कृष्ण को समझना और सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, इसका अर्थ है कि उनके प्रति पूरी तरह शरणागत होना। So submission is very important. Without submission, we cannot understand the Supreme Lord, we cannot realize transcendental knowledge. तो ये समर्पण होना बहुत ही जरूरी है, उसके बिना पूर्ण रूप से भगवान को समझना या उनका साक्षात्कार करना संभव नहीं है। But Lord Chaitanya is Patita Pavana. He is merciful. भगवान चैतन्य हैं पतित पावन, वो बहुत कृपालु हैं। He is merciful for those who are foolish and cannot take to Krishna consciousness. वे उनके ऊपर भी कृपालु हैं जो मूर्ख हैं और कृष्ण भाव धारण नहीं कर पाते हैं। Therefore, he came to personally teach us how to take to Krishna consciousness. इसलिए वो व्यक्तिगत उदाहरण से हमको ये सिखाने के लिए आए कृष्ण भक्ति को ग्रहण कैसे किया जाए। And that program is Kirtan, Sankirtan. और वो जो कार्यक्रम है वो है कीर्तन, संकीर्तन। For the first meeting between Srila Rupa Goswami and Lord Chaitanya was in Prayag. जो पहली भेंट हुई थी श्री रूप गोस्वामी
this was the first meeting, and at that time, Srila Rupa Goswami composed a verse. ये पहली मिनट थी और उसमें श्री प्रभु स्वामी ने एक श्लोक रचना की। You may have heard that verse before. आपने श्लोक पहले सुना होगा ये। Namama Vadanyaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namagavat Vise Namaha. That so Krishna comes as Lord Chaitanya to give us Krishna Prema. तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं हमें कृष्ण प्रेम प्रदान करने के लिए। So, but he comes as his own devotee to show how to practice Krishna consciousness. तो कृष्ण अपने भक्त के रूप में ही प्रकट होकर हमें ये प्रदर्शित करते हैं कि कृष्ण भावनामृत का अभ्यास कैसे करना है। But our process is to submit ourselves. लेकिन जो विधि है वो ये है कि हमको खुद को समर्पित करना है। Without submission, there is no hope of advancing in Krishna consciousness. समर्पण के बिना कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने का प्रश्न ही नहीं है। Lord Chaitanya was preaching Trinadapi Srisnana, Tarora Visaisnana, Amana Manadana Kirtanya Sudahahi. भगवान चैतन्य प्रचार करते हैं प्रणामपि स्वनीचि न तरोरपि सहिष्णु अमानिना मानदेना कीर्तन में सदा हरि। So, more humble than a grass in the tree, in the street. जो मार्ग में पड़े हुए उदाहरण से भी खुद को निम्न समझना चाहिए। And more tolerant than a tree. वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होकर। A tree gives shelter to everyone against the heat in the summer. पेड़ सभी को छाया प्रदान करता है गर्मी की कड़वाहट धूप में भी। Then it gives a cooling shade. वो एक शीतल छाया प्रदान करता है। And in the winter it's warm under the tree. और ठंड में पेड़ के नीचे गर्मी का एहसास होता है। So the tree is serving. तो इस प्रकार पेड़ सेवा में लगा रहता है। But if someone cuts the tree down, he does not protest. He does not say, I've served you so nicely, why are you doing that? He's tolerating. लेकिन वृक्ष जो है जब उसको काटता है तो प्रतिरोध नहीं करता है कि मैंने तुम्हारी इतनी सेवा की है तुम मुझे क्यों काट रहे हो। वो वृक्ष सहन करता है। Do not expect honor, सम्मान की आशा नहीं करनी चाहिए। but practice to give honor to others. दूसरों को सम्मान प्रदान करने का अभ्यास करना चाहिए। That, so according to our qualifications, we can perceive the absolute truth as Brahman, Paramatma, or Bhagavan. तो हमारी योग्यता के अनुसार हम ब्रह्म परमात्मा या भगवान इन अनुभूतियों का साक्षात्कार कर सकते हैं। Ye yatamam prabhachanti tam sate bhajamyam. According to their surrender, I reveal. ये यथार्थ प्रबंधन देवता से जैसे समर्पण की मात्रा के अनुसार भगवान स्वयं को प्रकट करते हैं। But those who are intelligent, in Kali Yuga, they worship the Supreme Personality of Godhead. तो इस कलयुग में जो बुद्धिमान हैं वे पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करते हैं। Yayanta Isumedasa, those who are intelligent worship the Supreme Personality of Godhead. ये जनती सुमेध से जो बुद्धिमान हैं वो संकीर्तन के द्वारा सेवा करते हैं। So, and they will worship the Supreme Lord by the process of Sankirtan, chanting the holy names of the Lord. और वे पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करेंगे संकीर्तन यज्ञ के विधि द्वारा भगवान के पवित्र नामों के कीर्तन द्वारा। But what kind of intelligence do we need? लेकिन हमको किस तरह की बुद्धि की आवश्यकता है इसके लिए? Why didn't Einstein chant Hare Krishna? आइंस्टाइन ने क्यों हरे कृष्ण कीर्तन नहीं किया? Because he's envious of Krishna. क्योंकि वो कृष्ण से ईर्ष्या करता था। We've seen that the scientists today, they rule out everything metaphysical. हम देखते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं आज
पराभौतिक जो भी चीजें हैं उन सबको नकार देना चाहते हैं। They are against any higher power. किसी उच्च शक्ति को स्वीकार नहीं करना चाहते, उसका विरोध करते हैं। So, but you have different kinds of intelligence. लेकिन इस तरह अलग अलग प्रकार की बुद्धि होती है। There are people who are brilliant in understanding abstract concepts in mathematics. इस तरह से बहुत सारे लोगों का इस तरह बुद्धि है कि वे गणित के कठिन से कठिन सूत्रों को भी आसानी से समझ लेते हैं। There are those who have practical intelligence. कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास व्यवहारिक बुद्धि होती है। And there are those who have business intelligence. कुछ ऐसे लोग हैं जिनके पास व्यवसाय से संबंधित महारत हासिल होती है। So when Srila Prabhupada mentions one businessman and he was illiterate. But he started a big company. If he had to go to the bank to write a check, he had to tell a servant to sign for him because he could not write. But he was a brilliant businessman. So, different kinds of intelligence. But we need spiritual IQ. It is a different kind of intelligence. How to get that intelligence? Tatvinepane pariprasna sevya pradakshantitesham jnanas tatvadarshana. Then serve the Supreme, serve the spiritual master submissively and inquire from him. If we do that, then Krishna will be pleased. That's the best service we can render to the Supreme Personality of Godhead. And that serving the spiritual master in that way is a sign of love. Service to please the spiritual master is transcendental love. And Krishna said, Tesham satayuktam bhajnam priti purvakam. If someone serves me with priti purvakam, with a little love, so if we go to the process of submission, inquiry and service, then Krishna, Tadami Buddhyondam, he will give us this spiritual intelligence from within the heart. So, with that spiritual intelligence, it's very useful to worship Krishna. And in Kali Yuga, those who have a little of this intelligence, they worship the Lord to the process of Sankirtan.
but it requires submission. लेकिन इसके लिए समर्पण की आवश्यकता है. So if we remember this formula of Lord Chaitanya, Trinata Vishnu, Tora Vishnu, Amana Manana Kirtanya Sudari, that's practically the process to get this IQ, spiritual IQ. चेतन महाप्रभु जो फॉर्मूला है प्रणव श्लोक, यदि हम उसको याद रखते हैं तो ये ही वास्तव में जो है सूत्र है आध्यात्मिक बुद्धि स्पिरिचुअल आईक्यू को प्राप्त करने के लिए. And therefore Lord Chaitanya, although Krishna himself, he accepted a spiritual master. और इसलिए भगवान चैतन्य आनंद में स्वयं पुरुषोत्तम भगवान हैं, उन्होंने भी आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार किया. And Ishvara Puri instructed him. ईश्वर पुरी ने उन्हें उपदेश प्रदान किया. His instructions were revealed by Lord Chaitanya to Prakashananda Sarasvati, the leader of the Mayavadis in Varanasi. उनके जो उपदेश हैं वो चैतन्य महाप्रभु को प्रकट हुए थे और प्रकाशानंद सरस्वती थे जो मायावादियों के नेता थे. Prakashananda Sarasvati inquired from Lord Chaitanya, "You are such a beautiful young sannyasi. प्रकाश सरस्वती जी ने चैतन्य महाप्रभु से पूछा कि आप तो एक युवा सन्यासी हैं, सुंदर सन्यासी हैं, Why are you not studying Vedanta? क्यों आप वेदांत का अध्ययन नहीं कर रहे हैं? Why are you sentimentally chanting these holy names?" क्यों भावों की तरह अपने हरिनाम का कीर्तन नहीं कर रहे हैं? Well, Lord Chaitanya said, when I surrendered to my spiritual master, then my spiritual master said that I'm a great fool. भगवान चैतन्य ने उत्तर दिया कि जब मैंने अपने आध्यात्मिक गुरुदेव की शरण ग्रहण की तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम महामूर्ख हो. My spiritual master told me, you are not fit to study Vedanta. चेतना ने बताया कि मेरे आध्यात्मिक गुरु ने मुझसे कहा कि तुम वेदांत का अध्ययन करने के अधिकारी नहीं हो. So in the Kali Yuga, we are all Sudra Sambhava, born as Sudras. तो इस कलयुग में हम सब हैं शुद्ध संभव, सभी शुद्ध हैं. We cannot understand the Vedas. ये वेदों को समझ नहीं सकते. But Lord Chaitanya said, my spiritual master said, you are not fit to study the Vedas, just chant these holy names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. लेकिन भगवान चैतन्य ने कहा कि मेरे गुरुदेव ने कहा कि आप वेदों को पढ़ने के योग्य नहीं हैं, आप केवल हरिनाम का कीर्तन कीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र. So then, he said, Lord Chaitanya said to Prakashananda Sarasvati, then I started to chant these holy names of Krishna. तब चैतन्य महाप्रभु ने प्रकाश सरस्वती से कहा कि इस आदेश को पाकर मैंने हरिनाम कृष्ण के पवित्र कीर्तन आरंभ कर दिया. And I became completely mad. और उसके परिणाम स्वरूप मैं पूरी तरह पागल हो गया. Of course, Lord Chaitanya immediately experienced love of God at highest prema, and he was thinking, I became mad. क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तुरंत ही जो है कृष्ण प्रेम का अनुभव हुआ, सबसे उच्च प्रेम का, और वो सोचे कि मैं पूरी तरह पागल हो गया. So Lord Chaitanya said, then I went back to my spiritual master. तब चैतन्य महाप्रभु बोले कि मैं अपने गुरुदेव के पास वापस गया. He said, I said to Ishvara Puri, when I started to chant his holy names, I became mad. तो उन्होंने उनसे इसलिए बताई कि जैसे ही मैंने हरिनाम कीर्तन आरंभ किया तो मैं पागल हो गया. And he described the symptoms to Ishvara Puri. और उन्होंने ईश्वरपुरी को ये जो लक्षण प्रकट हो रहे थे उनका वर्णन किया. And his spiritual master was very happy to hear that. और आध्यात्मिक गुरुदेव इसको सुनकर बहुत ही प्रसन्न हुए. But then after that, Lord Chaitanya had a discussion with Prakashananda Sarasvati. लेकिन उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु का प्रकाश के साथ एक संवाद हुआ, चर्चा हुई.
about the goal of the Vedas. कि वेदों का लक्ष्य क्या है इस विषय में. And Lord Chaitanya, based on the Vedas, established that worship of Lord Krishna is the highest goal. और भगवान चैतन्य महाप्रभु ने वेदों के आधार पर ये स्थापित किया कि भगवान कृष्ण की पूजा ही सबसे बड़ा लक्ष्य है. And he divided, he established Lord Krishna's supremacy, and he defeated all the Mayavadi arguments. तो इस तरह उन्होंने भगवान कृष्ण की श्रेष्ठता को स्थापित किया और सारे मायावादी तर्कों को परास्त कर दिया. That you can read in Chaitanya Charitamrita. आप चैतन्य चरितामृत में ये संवाद पढ़ सकते हैं. And what was the result? और इसका परिणाम क्या हुआ? All these Mayavadis surrendered to Lord Chaitanya and became devotees. सारे मायावादी भगवान चैतन्य के शरणागत हो गए और सही भक्त बन गए. We should not try to preach to Mayavadis, but Lord Chaitanya, he could do that. हमें मायावादियों को प्रचार करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवान चैतन्य ऐसा कर सके. But that's, I think that's the Madhya Lila, chapter 23, where you find these stories. I think कि मध्य लीला में अध्याय 23 है जहाँ पे आपको ये चर्चा मिलेगी. Because before in chapter 17, Lord Chaitanya was also in Varanasi at the house of Tapana Mishra with Chandrasekhar. क्योंकि इसके पहले चैतन्य महाप्रभु वाराणसी में भी गए थे, तपन मिश्र से भी मिले थे. At that time, these Mayavadis were severely criticizing Lord Chaitanya. उस समय ये मायावादी चैतन्य महाप्रभु की बहुत निंदा कर रहे थे. But then later, when he came back, that's chapter 23, I think, there a Maharashtrian Brahmin came to Lord Chaitanya and invited him to meet with the Mayavadi sannyasis, and they were more receptive at that time. क्योंकि इसके बाद जब महाप्रभु वापस आते हैं वाराणसी अध्याय 23 में, तो एक महाराष्ट्र ब्राह्मण है, वो महाप्रभु को आमंत्रित करते हैं और उनसे निवेदन करते हैं कि आप एक मायावादी सन्यासियों से मिलिए. So Mayavadis are offenders of the Supreme Lord. तो मायावादी जो है लेकिन भगवान कृष्ण के अपराधी हैं. And Lord Chaitanya gave his mercy to them. और भगवान चैतन्य ने उनको भी कृपा प्रदान की. He gave his mercy to Jagai and Madai, the most fallen. उन्होंने अपनी कृपा सबसे पतित जगाई मदाई को भी प्रदान की. Kripa Balakana Koro, this verse where Haha Prabhu Nityananda, Premananda Sute, Kripa Balakana Koro, Amikoro, Boro Duki. Yeah. We are the most fallen in this. People are most fallen in this age. Patita Pavana. इस युग में लोग बहुत ही पतित हैं, हमसे पतित हैं, और वो हैं पतित पावन. And this song says that we have the right, the claim, because we are the most fallen, to get the mercy of Lord Chaitanya. विज्ञान में बताया गया है कि हमें कृपा प्राप्त करने का अधिकार है, क्योंकि हम सभी तब से अधिक पतित हैं ना, इसलिए. So that's the hope for us in Kali Yuga. तो कलयुग के जीवों के लिए यही एक आशा है, Our only hope. एकमात्र आशा है. Lord Chaitanya has given us more than just some hope. चैतन्य महाप्रभु ने हमें संभोग से भी अधिक कुछ प्रदान किया है. Lord Chaitanya opened the door to Goloka Vrindavan. गोलोक वृंदावन का मार्ग चैतन्य महाप्रभु ने प्रशस्त कर दिया है. Because Lord Chaitanya is in the mood of Srimad Radharani. क्योंकि भगवान चैतन्य श्रीमती राधा रानी के भाव में प्रकट हुए हैं. What is the process of entering in Vrindavan? वृंदावन में प्रवेश करने की विधि क्या है? We can only enter into Vrindavan by the mercy of a resident of Vrindavan. हम वृंदावन में केवल वृंदावन वासी की कृपा
प्रवेश कर सकते हैं। Yeah, there's the Ragatmika Bhakta. The perfect, we can only get into Vrindavan by the mercy of the perfected devotee, the eternal associate of the Lord. रागात्मिक भक्त हम वृंदावन में केवल जो पूर्णता प्राप्त होते हैं उनकी कृपा से ही प्रवेश कर सकते हैं, जो कि भगवान के नित्य पार्षद हैं। Who is the devotee in Vrindavan with the highest realization, with the highest love for Krishna? वृंदावन में ऐसा कौन से भक्त हैं जो कि सबसे अधिक कृष्ण से प्रेम करते हैं, सबसे अधिक साक्षात्कार प्राप्त है? It's Srimad Radharani. वो हैं श्रीमती राधारानी। So if we have the mercy of Lord Chaitanya is in the mood of Srimad Radharani. तो यदि हमें भगवान चैतन्य की कृपा प्राप्त होती है तो चैतन्य महाप्रभु राधारानी के भाव में ही है। Just by serving Lord Chaitanya, we get entrance into Goloka Vrindavan. भगवान चैतन्य की सेवा करने से ही केवल हम वृंदावन धाम में प्रवेश प्राप्त कर सकते हैं। This was never given before. कभी पहले ऐसी कृपा प्रदान नहीं की गई थी। Very good. Shri Gaur Purnim ki Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. So any questions, comments? कोई प्रश्न है? Yes. Yes, there's a question. Hare Krishna, Ji. Maharaj, as you said that Chaitanya Mahaprabhu came to teach us how to surrender, but the process which he taught, the Radha-Krishna Ujjain, so at my own personal level, I find that it is, even that is very difficult to, if you are doing something good for other, like being tolerant like a tree. So even little tolerance is very difficult for me. I try but I fail. Sometimes I am not trying sincerely. I don't have that much desire. So how to, this seems impossible to do. हरे कृष्णा का प्रश्न है। महाराज आपने बताया कि भगवान चैतन्य ने परम करुणामय अवतार है और उन्होंने जो विधि प्रदान की प्रणा को सुनते हैं वो मुझे पालन करना बहुत ही कठिन लगता है। कभी उसमें फेल हो जाते हैं, कभी प्रयास ही नहीं करते हैं, तो कैसे हम इसको पालन करना है इस विधि को? Is chanting Hare Krishna, is it difficult? क्या हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना कठिन है? Is dancing in the kirtan, is it difficult? कीर्तन में नृत्य करना क्या कठिन है? Taking prasad, very difficult? प्रसाद ग्रहण करना बहुत ही कठिन है क्या? That's our process. You chant Hare Krishna, you dance and you take prasad. बस ये है कि आप कीर्तन कीजिए, नृत्य कीजिए और प्रसाद ग्रहण कीजिए। You may not feel immediately the effect, आपको तुरंत हो सकता है प्रभाव इसका पता न चले, but the effect is enormous because it's destroying all your previous karma. लेकिन उसका प्रभाव तो बहुत ही अद्भुत है। ये आपके पूरे पिछले कर्मों को नष्ट कर रहा है। Your ongoing karma will not be destroyed अभी जो हमारे कर्म हो रहे हैं हो सकता है वो एकदम नष्ट ना हो, because your body is made of karma. क्योंकि आपका शरीर तो कर्म से बना हुआ है ना। That if you don't have karma anymore, you disappear, no body anymore. यदि आपके कर्म पूरे ही खत्म हो जाएंगे तो आप ये शरीर आप रहेगा ही नहीं, आप गायब हो जाएंगे। But it's like a fan that turns, you put off the electricity and it continues to turn for some time. So, yes, our karma will go on till the end of the body and then we don't take birth again. तो ये इसमें पंखे का उदाहरण आता है कि जितने बड़ा कर देते हैं तो भी पंखा जो है कुछ देर तक चलता रहता है। उसी तरह हमारे कर्म भी जो है ये अभी चल रहे हैं, तो जैसे ही शरीर के अंत होने के साथ नष्ट हो जाएंगे और हम फिर अगला जन्म नहीं लेना पड़ेगा।
Krishnadas Kaviraj, the author of Chaitanya Charitamrita, he gives the following advice. Even the most difficult things become easy when you remember Lord Chaitanya. Even the most easy things become impossible to perform when you forget Lord Chaitanya. Therefore, it's important, before we chant Hare Krishna, to chant Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. You pray consciously for the mercy before chanting, and then you start chanting, meditating of Lord Chaitanya. इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हरे कृष्ण महामंत्र का प्रारंभ करने के पहले हम ये 5 मंत्र का जप करें एक बार, और इस तरह से आप भगवान चैतन्य को प्रार्थना कर रहे हैं निरंतर कृपा के लिए कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करने के पहले उनकी कृपा प्राप्त करना चाहते हैं. Don't forget Lord Chaitanya during your chanting. भगवान चैतन्य को भूलिए जब आप जप कर रहे हैं. You try it out and let me know what happens. आप इसे इसका अभ्यास कीजिए और फिर बताइएगा क्या होता है. Is that okay? Good. Good, thank you very much. Yantra Srimad Bhagavatam ki, Shri Chaitanya Mahaprabhu ki. Thank you for the translation. I said something that made sense. Everything was full of sense.